हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन के बारे में। एन अमेजिंग फंक्शन ऑफ एक्सेल जो आपको काफ़ी हेल्प करता है डेटा क्लीनिंग। नाउ लेट्स से हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास सभी नेम्स हैं, बट फर्स्ट कॉलम में ही हमारे पास दोनों नेम्स अवेलेबल हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। बट मेरा बॉस कह रहा था कि इनको चेंज करो एंड फर्स्ट नेम का कॉलम हमें ये रखना है, बट हमें नेक्स्ट लास्ट नेम जो है वो इस कॉलम में लेकर आने हैं। ओके, सो उसको हम कैसे करने वाले हैं, लेट्स सी। अभी फिलहाल हम देख सकते हैं कि डेटा में राजू कुमार के बीच में कमा है, बट राहुल सिंह के बीच में फुल स्टॉप है, एंड टॉम जेरी फरहान रस्तोगी एंड ऑल यू सी देयर आर डिफरेंट पंक्चुएशंस हियर। नाउ कुछ लोग क्या करेंगे कि इसको एंटर करेंगे, चेंज करेंगे, फर्स्ट दिस देन दिस, एक कॉमन करने के लिए। बट आई शो यू अनदर ट्रिक, आप इसको कैसे कर सकते हो। we'll select this, we'll press Control plus H. Now this will pop up a window, find and replace का। सो मैं चाहता हूँ कि बीच में एक सिंपल डिलीमीटर हो विच इज कमा। सो पहले मैं फुल स्टॉप को फाइंड करके उसको रिप्लेस करूंगा कमा से। नाउ इन दिस सिलेक्शन इसने ऑल 5 फुल स्टॉप्स जहां जहां मेंशन थे वहां वहां इसने कमा लगा दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि जो बैक स्लैश है उसको भी ये कमा कर दे। सो आई जस्ट सिंपली type come like backslash in find word and I want it to replace with comma. That's all. It's very simple. So I'll click on replace all. Now all done. And I'll just close this. Now if you see, Raju Kumar के बीच में भी कमा है, Rahul Singh के बीच में भी, and all the names have one simple punctuation. Now अब क्या करेंगे? We'll make a selection here. We'll go to the data tab. In data tab, you will find this option called text to columns. Now how this functions is, जब आपके एक ही सेल में कुछ वैल्यूज होती हैं, लेट्स से टेक्स्ट है, ओके, बट वो जॉइंट है, बट देयर इज अ सिंगल सेपरेशन, जैसे कि कमा, फुल स्टॉप, बैक स्लैश, देयर इज समथिंग, सो यू कैन एक्चुअली यूज दैट टू सेपरेट दीज वैल्यूज इन डिफरेंट सेल्स। नाउ लेट्स से अब हम इस डेटा में आ चुके हैं, हमारा सेपरेशन क्या है, विल सिंपली यूज आवर कमा, क्योंकि हमारा डेटा कमा से ही सेपरेट हो रहा है। सो विल सेलेक्ट कमा। अगर कोई और सिंबल है तो यू कैन जस्ट क्लिक हियर एंड टाइप ऑफ, लेट्स से इट वाज बैक स्लैश, तो आप बैक स्लैश यूज कर सकते हो, बट हमारे डेटा में ऐसा नहीं है, सो वी विल यूज कमा। We'll click on next and we want to keep it general and finish. Okay, and now see, Raju first name in the first column and last name in the last name column for all the names.